Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you to bring out the second lecture on economics under the initiative of UdaanIAS. If I'm talking about in the last of the class, we had majorly discussed about the concept of national income, and I guess you all have been able to understand that concept very well. Similar kind of effort will be required to understand the concept of gross domestic product, or in general language, I am calling this entire the thing as GDP. GDP. Every news channel, in every tapri we are always talking about the concept of what is GDP, what is that, our GDP is increasing, our GDP is declining, and all those kind of stuff. So in this of the section, we will be trying to understand what this obviously we will not be able to cover entire GDP ka section, but yes, we will be having a kind of gist of what this GDP is all about, how we are going to calculate this entire of the GDP, what is this concept all about, what is nominal GDP, what is real GDP, and all those kind of thing. See, if I'm saying regarding GDP is having three main keywords that is out there. And number first is your gross. Gross means summation of all. Gross means summation of all. That is addition of all. D means that is domestic. Domestic in turn means within a particular region. Within a particular region. When we are talking about the GDP of a state, we are saying that is state becomes our state, territory becomes our region. When we are talking about the national GDP, we are talking about that is GDP of particular nation, that is India or any of the country. Similarly, if I'm talking about P, understand P stands for what? That is product. So that is gross domestic product, that whatever we are producing in a particular region, uska summation kar do, add कर दो, and that will be our GDP. ठीक, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, and you will be able to understand each and everything in a crystal clear manner. Okay, see, right now I'm going to take one of the example. This is one of the way to calculate GDP, but that is not the only way. We will be understanding how in multiple of the ways we can calculate GDP, but this is the most simple of the term in which I can make you understand. For example, I am talking about that there is pen. There is a production of pens in an economy, and I can say that there is a production of what? There is a production of shirts as well. कितना है? shirts. ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं जीडीपी कैसे आप व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीडीपी? दैट इज यू हैव टू टेक द क्वांटिटी दैट इज आउट देयर, कितनी क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी का क्या प्राइस है. ठीक, एक क्वांटिटी का क्या प्राइस है और आप इसको क्या कर दो, समेशन कर दो, ऐड कर दो सबका, एंड अल्टीमेटली यू विल बी क्या गेटिंग? जीडीपी. I'm again saying this is not the only way, but this is one of the easiest way to understand how we are calculating the GDP. For example, I am saying pens, we have produced 10 pens in an economy, and every pen is costing me 10 rupees. For example, I'm taking shirts. Shirts I am producing 15 shirts in an economy, and every shirt is costing me 100 rupees. So what will be the GDP if I'm considering only these two products are getting produced? I will be saying price into quantity. Here it comes out to be क्या? 10 into 10 is 100, 15 into 100 is 1500. Okay, so gross domestic product, gross का मतलब क्या था? समेशन कर दो. तो if I am doing the summation of all these things, I will be saying 100 plus 1500 is equal to 1600 is going to be your GDP. That is what the easiest of the concept in which you can understand what is GDP. Obviously, this is at this level you will not be able to visualize that is what is happening at the national level, but this is just a crux that how we are calculating it. Okay, obviously there are other of the methods, okay, in which in for example in GDP we are talking about income method, expenditure method, product method, and all these kind of things that we will be discussing in a due course of time. But I guess by giving you this example, you have been able to understand the concept in a very fine manner. Now see, you have understood the GDP, that how, what is GDP? GDP is gross domestic product, production in a particular region, and then we are doing the summation of it, and hence we are calculating the GDP of a particular of the region. Now see, the thing that comes into our mind is there are two main keywords that you have to understand whenever you are talking about GDP. And those are the keywords, if I'm saying, are your real GDP and nominal GDP. दो keywords आपको याद रखने हैं क्या? Number first I am saying is your real GDP. Number second is your nominal GDP. क्या?
real GDP and nominal GDP. See, if I'm telling you what this GDP को हम क्या दो तरीके से we are usually क्या understanding. Number first I'm saying real GDP and number second is your nominal GDP. Nominal GDP. Nominal GDP. See, what is नॉमिनल जीडीपी. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने आपको क्या किया था, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया था. ये क्या था ये दोनों आपका, ठीक. व्हाट वाज दिस एंटायर ऑफ द थिंग, दिस वाज प्राइस, दिस वाज प्राइस. सो द मेन डिफरेंशिएटर बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इज योर प्राइस ओनली. ठीक, क्या है देखो, नॉमिनल जीडीपी में वी आर टेकिंग द प्राइस एट करंट लेवल. सो हियर वी आर सेइंग करंट लेवल प्राइसेस, करंट प्राइस दैट इज गोइंग आउट इन एन इकोनॉमी. अभी क्या रेट है वो मुझे बताओ, मार्केट में अभी क्या रेट है एक पेन का वो मुझे बताओ, करंट प्राइस. ओके, एंड व्हेन आई एम सेइंग रिगार्डिंग रियल जीडीपी में वी आर टेकिंग एट a particular base, in particular year what was the price. So here I am saying constant price or base year price ठीक. Right now how we are calculating the GDP, we are calculating by taking the constant or the base year price at 2011 and 12. ठीक, अभी मैंने ये बेस ईयर मान रखा है आपका. एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ सी, if I'm talking about this entire of the concept, I will be saying that is, for example, I have taken this entire of the concept of current price. अब देखो एक चीज बताना, for example, I am buying one particular pen right now in 10 rupees. Obviously, if I am saying कि प्राइस ऑफ दैट पेन आफ्टर 20 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या बोला, 2023 में द प्राइस ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज. ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं, आज से 20 साल बाद कर लो, 2043 में दिस प्राइस इज गोइंग टू बी फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज, मान लो 30 रुपीज. ठीक है, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, मैं क्या करता था जीडीपी में, किससे मल्टीप्लाई करता था, प्राइस से. ठीक, एक मैं बोल रहा हूं प्राइस क्या. अच्छा, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ना ये वाला ईयर चेंज करके लेट अस चेंज इट टू बी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग 2011 और इसको ले लेते हैं 2023 मान लो फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आई एम सेइंग 2011 में इसका प्राइस था 10, 2023 में इसका प्राइस हो गया क्या, 30 रुपीज मान लो फॉर एग्जाम्पल. ठीक, अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, आई विल बी गेटिंग, ऑब्वियसली प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, एंड वेयर इज प्राइस, क्वांटिटी, इफ आई एम टेकिंग क्वांटिटी एज सेम, दैट इज 1 in each case. So obviously the GDP calculation will be in, if we are calculating at 2011 के level पे, it will be coming out to be 10, and if we are calculating at the level of 2023, it will be come out to be 1 into 30, that is equal to 30 rupees. ठीक है, इससे I can make a conclusion that every time your nominal GDP will be greater than real GDP, that is your nominal GDP will be greater than real GDP. Why? Because price increases over the period of time because of inflation. Price increases over the period of time because of inflation. ठीक, अच्छा, तो इससे मैं बोल सकता हूं, आई कैन से दैट इन ऑर्डर टू एडजस्ट योर प्राइजेस, इन ऑर्डर टू नॉट टू गिव एन ओवर हाइक्ड वैल्यू ऑफ जीडीपी, in order to not to give the overhyped value of GDP, we are taking at a particular level, एक particular base year पे हम लोग क्या कई बार क्या निकालते हैं अपना GDP. ठीक है, ठीक, अभी मैंने बेस ईयर क्या माना है, 2011 को मैंने अपना बेस ईयर माना है. क्या माना है, 2011 को आई हैव टेकन माय बेस ईयर. ठीक, सो इससे एक इंपॉर्टेंट आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट इज ऑलवेज कंसीडर योर नॉमिनल जीडीपी विल बी ग्रेटर देन योर रियल जीडीपी. आई हैव टोल्ड यू व्हाई, बिकॉज प्राइस इनटू क्वांटिटी, if I am assuming it to be constant, I will be saying that is price increases over the period of time, and when the price increases over the period of time, it is, I am saying, because of inflation, your nominal GDP that you are calculating at current price, that is market price, will always be greater than your real GDP. That you have to understand from the UPSC point of view. Able to understand? Sure.
Now I am saying इसी से एक important conclusion we can draw. Obviously I have already told you. Number second of the thing that you have to keep in mind, that is a concept of एक concept होता है regarding a GDP deflator. क्या मैं बोलता हूँ GDP deflator. GDP deflator. It is a very easy concept. क्या GDP deflator. GDP deflator. What is this GDP deflator all about? GDP deflator is majorly telling you the ratio between nominal GDP divided by real GDP. ठीक, nominal GDP divided by real GDP. तो इसमें मैं एक तरीके से बोल सकता हूं that is जो nominal GDP is as such not your inflation adjusted, but real GDP is your inflation adjusted. ठीक है, real GDP is your inflation. So what I can say that real GDP is your inflation adjusted and nominal GDP is not inflation adjusted. ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं regarding your GDP and then you will be able to understand. अच्छा, इसे एक चीज याद रखना, if I'm calculating GDP deflator, it is coming out to be your nominal GDP divided by real GDP. Nominal GDP divided by real GDP. ठीक, and I am saying nominal GDP is greater than real GDP. Why? Because of inflation. So it will be coming out to be some value that will be usually क्या greater than 1. ठीक है, why? Because nominal is greater than real. ठीक, now let us see one of the question on GDP. ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं आपका GDP. ठीक, so this is the question of year 2011 का 2011 में यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक, एक बार देखते हैं व्हाट दिस क्वेश्चन इज मेजरली सेइंग. सी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years. ठीक है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी, कौन सी जीडीपी? ठीक है, ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल बोल रहे हैं, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years. 2011 का क्वेश्चन है, सो आई कैन से दैट दे आर मेजरली क्या ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम 2006 and 11. देखो, अभी हो सकता है आपको क्या ट्रेंड पता शायद ना हो, लेकिन एक चीज से यू कैन डू दैट बिकॉज दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू शुड बी हैविंग. ठीक, सो पहला स्टेटमेंट में बोल रहे हैं इन द लास्ट 5 years. इन द सेकंड स्टेटमेंट दे आर सेइंग द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years. ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी? तो देखो, अगर मैं बात करता हूं ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, वैसे थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से रिलेवेंट था, बट इससे क्या पता चल रहा है आपका कि जीडीपी पे भैया किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की क्या कोशिश करिए. ठीक, ऑब्वियसली इफ यूपीएससी इज आस्किंग सच क्वेश्चन, ठीक है, दिस ईयर ऑब्वियसली यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द डेटा ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. नाउ द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बाय बच्चे को पता है क्या कि 2007-8 के आसपास बिकॉज ऑफ यूएस सब प्राइम क्राइसिस, ठीक, the GDP of there has been a global recession and as a result of that GDP growth rate had declined. ठीक है, so growth rate of GDP has steadily increased. No, it had not steadily increased. There was a kind of bit of decline. ठीक है, कुछ decline आया था. ठीक है, तो this statement is incorrect. ठीक, the growth rate in per capita income has steadily increased in the last 5 years. हाँ, ये वाला statement सही था. ठीक है, that is the growth rate in per capita income. ठीक, पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ी थी. ठीक है, ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैड इंक्रीज्ड, बट जीडीपी में क्या इंक्रीज नहीं आया था. क्यों नहीं आया था? क्योंकि 2007-8 में सब प्राइम क्राइसिस आया था यूएस में. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर वाज ग्लोबल रिसेशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बी इज द आंसर. सी, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी. ट्रेंड बहुत पूछता है आजकल, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने की आदत होनी चाहिए. सो आज की सेशन में हमने क्या 15 मिनट्स के सेशन में हमने क्या किया कि भैया एक आपको आइडिया दिया दैट व्हाट इज जीडीपी इन जनरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी, प्राइस इनटू क्वांटिटी से वी आर कैलकुलेटिंग इट. इन द नेक्स्ट ऑफ द सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कैलकुलेट द जीडीपी. ठीक, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट योर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी इज अबाउट क्या, एट करंट प्राइस. रियल जीडीपी इज एट
एट अ पर्टिकुलर बेस ईयर हम क्या लेते हैं 2011 2012 पे, कि भैया अगर मुझे पेन की कॉस्ट किस साल पे निकालनी है, क्या 2011 की कॉस्ट बताओ। क्यों? एक बार हमने ये चीज फिक्स कर दी तो फिर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर एंड देन वी हैड डिस्कस वन पीवाईक्यू क्वेश्चन एज वेल। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ठीक है, 15 मिनट के सेशन में। ठीक, एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो मी एट Sammy2908. This is my Telegram group. Every of my student is basically a part of this good venture, so you can follow me in Telegram. और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए। वाई? बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज अ गेम ऑफ EQ। चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।